Hello everyone, welcome back to today's lecture about the what HTML hyperlinks. So yesterday we studied about the HTML multimedia. Yeah. So today's our lecture 9 in the full stack web development course. And today's our topic HTML hyperlinks connecting the web with links. And we will explore more about the hyperlinks, actually the essential tool for the navigating the web. By the end of this lecture you will know how to create and customize links for your web page. So firstly, what is the meaning of the hyperlinks? Hyperlinks connects the different pages, got it, different pages and the resources on the web, forming the backbone of how we navigate the website. And you can say कि hyperlinks in HTML are clickable text or image that allow user to navigate to other pages or section of a web page. Okay, and they are created using the HTML anchor tag. Firstly, how to create a hyperlink is a very important and a good question. Use the anchor tag to define the hyperlink first. Okay, and the second is the use href. मैं आपको बताऊंगी href क्या होता है, एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म ईच एंड एवरीथिंग. href मतलब कि यूज द सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारे क्रिएट करने को hyperlink. Use a href attribute to specify the destination of the link. Okay, and the third is the use of text inside anchor tag as a link text. I think is clear now. So anchor tag. Anchor tag is simple yet powerful. Let's see how it connects different pages and the resources with just an href attribute. So firstly मैं actually क्या होता है, firstly मैं बताऊँगी anchor tag क्या होता है, then syntax, then attribute. So firstly the anchor tag. Anchor tag is used to create a hyperlink. अभी हमने पढ़ा hyperlink की definition में. And its functionality can be enhanced using various attributes. Okay, done. I think this is done. And you can also say that कि हम इसको पता क्या होता है, एक ही चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास अलग अलग वे होता है. अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अब मैं फिर से बता रही हूँ एंकर टैग की अनदर वे में डेफिनेशन क्या होती है. सो एंकर टैग डिफाइन करता है हाइपरलिंक. अभी हमने पढ़ा ये चीज़, तो विच इज़ यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर. डन, पढ़ा हमने ये भी अभी. The most important attribute of the anchor tag element is href attribute which indicates a link destination. वही पढ़ा हमने, बस एक ही चीज़ के डिफरेंट वे है. ओके, अब क्या हमारा सिंटैक्स है यहाँ पे, क्या है, पहले एंकर टैग की ओपनिंग है ना, ओपनिंग है. href में क्या लिखा हुआ है, https example.com. क्लिक किया, क्लिक हियर लाइक योर टेक्स्ट है वहाँ जिस पे हम क्लिक करेंगे हमें कुछ इंटरफेस दिखाई देगा. इंटरफेस जिसे मतलब कि जिससे यूजर इंटरेक्ट होता है, जो हमें दिखाई देता है. इट्स जस्ट लाइक योर फ्रंट एंड पार्ट. बैक एंड क्या होता है, सर्वर का होता है, वो हमें नहीं दिख रहा होता है, जैसे प्रोसेस हमारा रन हो रहा होता है. इंटरफेस क्या होता है, फ्रंट एंड जो यूजर से इंटरेक्ट होता है. ओके, जैसे कि पेटीएम में क्या होता है, पेटीएम में हमें दिखता है सब कुछ कि हम पेमेंट कर रहे हैं, पर एक्चुअली पेमेंट हो कैसे रही हो, उसका प्रोसेस क्या, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट, वो हमें जस्ट थ्योरेटिकली पता है, बट एक्चुअली क्या है हमें नहीं पता. वो मेरी बैक एंड है, वो दिस नॉट योर फ्रंट एंड पार्ट. फ्रंट एंड पार्ट क्या, हमने पेमेंट कर दी एंड आइकॉन्स वगैरह जो हम देख पा रहे, यूजर इंटरफेस, वो उसे कहते हैं फ्रंट एंड. आई थिंक दिस क्लियर. सो एट्रीब्यूट के href क्या होता है, फर्स्टली फुल फॉर्म ऑफ द href हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस. बट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस. ओके, स्पेसिफाई द लिंक डेस्टिनेशन.
specify the URL of the page or resource the link points to. Okay, and इसका use क्या, what's the use of it? Essential for the anchor tag to define the destination of your link. Okay, done. So types क्या होते हैं भाई, अब इसकी बताओ मुझे. टाइप्स ऑफ URL, एब्सोल्यूट URL एंड द relative URL. URL in the hyperlink can be of the two types, absolute and the relative. Done. So पहले मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊंगी, then explain it in another words. Absolute URL, these include the full address. It's very important point actually. Full address, full. Full address. Okay, these include the full address starting with HTTPS. Got it? So इसका पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन. अनदर वर्ड्स क्या होती है, क्या होता है. लेट्स थिंक. Actually, absolute URL provides your complete web address. We can say that this thing, including the protocol. Protocol क्या है हमारी इसमें? HTTPS is a very important. HTTPS domain name. HTTPS हो गई एक तो प्रोटोकॉल, डोमेन नेम एंड द पाथ टू द रिसोर्स. इसका यूज क्या है भाई वो बताओ पहले. यूज्ड क्या है इसका, व्हेन लिंकिंग टू अ रिसोर्स ऑन एक्सटर्नल वेबसाइट और रिसोर्स दैट रिक्वायर्स अ फुल एड्रेस. ओके, इसकी एडवांटेज क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, जस्ट थिंक इट, सोचो. थिंक. ओके, एडवांटेज मैं आपको बताती हूँ क्या हो सकती है. फर्स्ट क्या हो सकता है, नेसेसरी फॉर लिंकिंग टू एक्सटर्नल वेबसाइट. नेसेसरी फॉर लिंकिंग टू एक्सटर्नल वेबसाइट. ओके, एंड द सेकंड इज अ वर्क्स रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द करंट document. The one more thing, firstly see the syntax. क्या है, एंकर टैग की ओपनिंग है. ओके, और HREF में क्या है, HTTPS google.com visit Google. एंकर टैग क्लोज हो चुका हमारा. अब अच्छा एक चीज बताओ, टेल मी वन थिंग, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ द HTTPS? इट्स ओके, मैं आपको बताती हूँ फुल फॉर्म क्या होती है HTTPS की. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. ओके, अगर पता है, अगर हमारे पास सी है, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है HTTPS तो ये हमारा सही है. और अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है. जस्ट इसको ध्यान रखना हमेशा, इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then the HTTP secures is a secure HTTP encrypted using the secure sockets layer और transport layer security. मैंने आपको यहाँ पे नई चीज़ बताई एक्चुअली. So come back on topic. सो ये हमारा हमने सिंटेक्स पढ़ लिया. अब हमारा सेकंड टाइप पे आता रिलेटिव URL. These are the path relative to the current file. उसमें हमारा क्या था, फुल एड्रेस था. यहाँ पे हमने देखा फुल एड्रेस था. और यहाँ हमारे these are the path related to current file. Okay, and you can say कि a relative URL provides a path to a resource relative to the current document's location. Okay, and the use क्या है इसका, commonly used for linking. What commonly used for linking के लिए यूज होता है within a same website और project. Same website में linking के लिए यूज होता है. Just remember this thing only.
एंड इसका हम सिंटेक्स क्या है एक्चुअली, सिंटेक्स इज ओपनिंग एंकर टैग href about dot html about us your text एंकर, अगर दिस इज योर अबाउट अस, जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जस्ट फॉरगेट इट एंड when we click on it, then you can see another page of about us in this वेबसाइट के अंदर ही हम इसका भी पेज देखेंगे, उसको हम कहेंगे रिलेटिव यूआरएल। ओके, अब क्या एक्चुअली मैं आपको एक और चीज बता दूँ, रिलेटिव यूआरएल के एग्जांपल्स क्या हैं, सेम डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। सो फर्स्टली इसका एग्जांपल देखते हैं हम क्या होता है एक्चुअली, एडवांटेज रिलेटिव यूआरएल का, इजियर टू मेंटेन विद इन अ प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट में सब कुछ मेंटेन हो जाएगा, इट्स वेरी इजियर। ओके, and that makes the website structure more flexible when moving files. I think this is clear. अब क्या एक्चुअली हमें की डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट यूआरएल एंड द रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या था हमारा भाई, मैंने भी बताया था आपको, HTTPS and include your domain. Relative URL define a path relative to the current document's location without the domain. Up the example of the relative URL, first same directory. Same directory means refers to files located in a same folder as current document. Let's take an example. If the current file is index.html, okay, and you want to link to about.html in the same directory, so you can do it like I am writing here, you can see okay, यहाँ पे I am writing here, एंकर टैग ओपन किया हमने, href लिखेंगे पहले तो okay, then you can see dot कि हमारी दो फाइल है, html close it here and the home and connect close just you can see now easier, href index.html same directory में है। okay, this clear? हाँ, so sub directory, second example of the relative URL refers to a folder inside the current directory. Specify the subdirectory name followed by the file name in the path. Example is okay, now if the current file is in root folder and there is a blog folder containing post.html, when you write here like this, your anchor tag href index index.html home a means your anchor tag, okay, is clear? अब क्या है, थर्ड एग्जाम्पल क्या आता हमारा, सेम डायरेक्टरी हो गया, सब डायरेक्टरी हो गया, पैरेंट डायरेक्टरी, लिंकिंग index.html from a post.html. okay, this clear? So fourth is the anchor attribute.
एंकर एट्रीब्यूट, एंकर एट्रीब्यूट क्या होता है? एंकर एट्रीब्यूट में फर्स्ट है टारगेट, टारगेट एंड टाइटल एंड योर डाउनलोड. सो टारगेट क्या है? टारगेट इज योर अबाउट blank opens the link in a new tab, and we can say that specify how the link document will be displayed when clicked. Okay, the blank क्या था हमारा? open the link in a new tab or window, and the self भी हम यूज कर सकते हैं. वो opens the link in the same tab या विंडो में. एंड द पेरेंट क्या होगा? जैसे कि हमारे से टारगेट में हमारा ये ब्लैंक था, इसी टारगेट में हम वी कैन राइट लाइक दिस, एंड क्या था हमारा? पेरेंट, पेरेंट ये इसी का ये है. ओके, हाँ दोनों इसी के हैं. एंड द टॉप भी होता है एक्चुअली, टॉप भी. ओके, सो हमारा सेल्फ क्या था? ये वो डिफॉल्ट है, it's a default, opens a link in a same tab or window. Okay, and the parent is a opens a link in a parent frame, the user frames also. And the top में क्या है भाई? opens the link in a full body of your window, of the window, right? And the title क्या है? What's the meaning of the title? Title actually displays additional information on the home page, provides additional information about the link, typically displayed as a tooltip actually when hovered over. Okay, what's the use of it? Improves user experience and accessibility. Okay, and the third one is a download. Download allows downloading files. Suggests that the target file should be downloaded instead of being opened in the browser. Now, what is the use of it? You can also specify a file name for the download file. Okay, allow downloading file. I think it's clear. And another क्या था इसमें हमारा? rel, rel means your relationship. Relationship means specify the relationship between the current document and the link document. कॉमन वैल्यू क्या कहते हैं इसकी? नो फॉलो, नो ओपनर, नो रेफर, स्टाइल शीट. ओके, सो HREF मैंने आपको बता ही दिया. सो इसका समरी क्या था एक्चुअली? HREF में क्या था? डिफाइंस द लिंक्स डेस्टिनेशन. टारगेट में स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक. टाइटल एड्स अ टूल टिप टू द लिंक. Okay, the download suggests downloading the link file, and the release defines the relationship with the link. Example: anchor tags. Just opening here, href document.pdf. Download it. Download file. Anchor tag loops. Okay, and here linking to the adjacent. Linking to the adjacent, link to different resources actually, not adjacent. First क्या है? external website और internal website. External, internal, email link and the telephone link. So firstly ये क्या होता है हमारा? एक्सटर्नल क्या होता है? पहले हम ये चीज़ देखते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं. एक्सटर्नल क्या होता है? लिंक्स अ वेब पेज ऑन एन एक्सटर्नल डोमेन. यूज द टारगेट ब्लैंक एट्रीब्यूट टू ओपन द लिंक इन अ न्यू टैग, एंड यू कैन ऐड rel, नो ओपनर, नो रेफर for the security reason when using target blank. एक्सटर्नल लिंक का ये है सिंटेक्स एक्चुअली. ए ओपनिंग एंकर टैग href https example.com, target is blank, visit example, close it. So internal
internal connects to the another page within the same website or project, and the user relative URL for easier project maintenance. And this is your syntax: opening anchor tag href contact.html, contact is close it here. And the email, third one is an email, opens the user's default email client to the send an email, and you can pre-fill fields like subject, body, and so on. And your syntax is here: opening of anchor tag here, href mail to info@example.com, send an email, close it here. Okay. And the last one is a telephone link. Telephone link is enables user to directly call a phone number on devices that support telephony. Example, your smartphones. And use international dialing formats. Example, +1 for the US. Okay. This is your syntax: opening of anchor tag href tel means telephone link +123456790, call us, and close it here. Okay. एंड द की पॉइंट्स अब इसको समराइज करते हैं. तो इंटरनल पेज में क्या आता है हमारा? यूज रिलेटिव पाथ फॉर बेटर प्रोजेक्ट पोर्टेबिलिटी. यू कैन सी हियर. ठीक है. एक्सटर्नल में क्या है? इंक्लूड एचटीटीपी और एचटीटीपी फॉर प्रॉपर लिंकिंग. ईमेल में क्या है? यूज मेल टू द इंटीग्रेट ईमेल कम्युनिकेशन. ओके. And the telephone user tel for direct calls mobile devices. Here अब टेलीफोन हो गया हमारा. और कुछ ये ईमेल है. And then now what should I do? Now let's create a navigation bar with the hyperlinks to different sections of the website. This is a common feature in the most web pages. So open your VS Code. Open your VS Code. Now you can see my screen of VS Code. Just a minute. Okay, now create. code.html. HTML is what? Your extension for HTML. Just close it from here. Then press the shift and the exclamation mark. Then enter. Change the title. I am writing the HTML hyperlink instead of document. HTML hyperlinks. Okay. Then here write the H1 tag for heading. Write navigation menu. Navigation menu. nav bar बना रहे तो हमें nav लिखना पड़ेगा. And make the anchor tag write A. Press the enter. Suggestions are also given. href index dot write small index dot html. Okay. Right here
Same as for the about, write a for anchor tag, about.html, right here about. Service, services.html, right here services. Okay, and you can paste this line, you can copy this line and paste here, but I am not doing this thing because we are beginners. Okay, हम बिगनर्स को ये सिखा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनको एक्चुअली ईच एंड एवरीथिंग अंडरस्टूड कर पाए. कॉपी पेस्ट तो कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील. फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग and doing another. Contact us right here. Contact service. You capital. Okay. Done. हो गया. So click on show preview, left side of your VS Code. Installator, nice. It's very basic, I know. Open in browser. कोई नहीं, हम धीरे धीरे ऐसे बनाते रहेंगे. Now you can see. So here your home. This is your navigation menu. This is your actually H1 heading. Just and this is your home link, about, services, contact. Click on first home. Now you can see हमारा एक ही वेबसाइट पे वो दूसरा पेज ओपन हो चुका है होम के लिए. एंड ये हमारा एक्चुअली है, ये लिखा हुआ है मीडिया में index.html आ चुका है प्रॉपरली. एक्चुअली मेरा फाइल पार्ट है, अभी यहाँ फाउंड नहीं होगा बिकॉज हमने एक्चुअली कुछ किया ही नहीं है अभी. ओके, because now we are not creating the home page, we are creating the only simple things abhi फिलहाल. Same for about us, same for services, same for contact us. This is your actually link. Okay, okay, this is your H1 हेडिंग है हमारा, और ये हमारा नाम बार है, nav बार है पूरा एक्चुअली. होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, index.html, about.html, server.html and content.html. okay, so and you can practice on another questions. I am telling you some basic questions. So first you create a navigation bar but include a link to home, about and contact जैसा हमने अभी किया है. ये तो प्रॉपर सेव है हमारा. So first you can copy my code and do it. Add the downloadable link, provide a link to download an image or PDF, and experiment with mail to and telephone links. Create a links for sending emails and making the calls. So great job guys, you have mastered hyperlinks and the navigation.
In the next lecture, we will dive into the HTML list to the structure information more effectively. So thank you. See you to the next lecture.